Update on 60K deal. Um, not sure. Not sure. Oh, the 60K deal. Yes, yes, yes. It's under contract. We have like a 10 days. So their investors needs to send a 10-day someone in there to do the inspection. But it's gonna 10 days. So sometimes they're lazy. Sometimes they will do right away. We can't control them. Investors, I guess. Let me check my email real quick just to see if there's any update on that. If not, we'll get started. Guys, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था परचेज प्राइस वगैरह वाला वो मेक श्योर करें कि आप करके मेरे इनबॉक्स में भेज दें. देन आई विल हैव अ लुक. Okay, hopefully that makes sense. I'm gonna get started um, quickly here, and we're gonna talk a little bit about the we're gonna talk a little bit about the hybrid deal, basically. Can you check my message in general? Sure, I'll check everyone's message. No worries. Guys, someone's mic is on. Um, Make sure you're muted. Hamza, your mic is on. I don't know how to unmute him, but Hamza, if you can hear me, your mic is on. Um, I have no idea how to mute him. Yeah, I mean, I know where he's exactly at, but I wish he can hear me and mute himself. Hamza, your mic is on, so make sure to mute yourself. Okay, so basically, what we are talking about is the hybrid deal today. Talking about making sure that. Oh, I haven't been sharing my screen. Let me share my screen, guys. Just making sure exactly how we can figure this out when it comes to the hybrid deal. So, um, in your calculator, we always have seen couple things: Sarah Finance, Sub 2 and hybrid. Okay, we've only हम लोगों ने सिर्फ Sarah Finance की बात करी है अभी तक. Sub 2 and hybrid की नहीं करी इतनी ज़्यादा. Sub 2 की करी है, but hybrid की नहीं करी है. ठीक है, so we'll go with hybrid and how everything works in here. मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि अगर um, give me 1 second, I just got an email. See this now? Give me 1 second, sorry. Okay, so yeah, basically when it comes to the sub two deal, um, basically it is the sub two deal stems from Sarah Finance. अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं Sarah Finance नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस प्रॉपर्टी पे लोन है, तो जैसे ही वो लोन की बात करता है देन यू थिंक ऑफ टू थिंग्स, राइट. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एक सब टू डील का होता है जो कि मॉर्गेज टेक ओवर है, और
हाइब्रिड है। हाइब्रिड में मॉर्गेज टेक ओवर भी होता है और सेलर फाइनेंस वाली डील भी होती है, जिसमें हम सेलर को पे करते हैं एंड फिर मॉर्गेज को पे करते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सब टू में कि अगर बैलेंस घर का बैलेंस जैसे जैसे कोई बंदा ओन करता है 70,000 ओन करता है और यहाँ पे लोन बैलेंस वो आपको बताता है कि 65 है, 65,000 उसका लोन बैलेंस है फ़िलहाल का, देन 5,000 इज डिफरेंस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इसका मतलब है इसकी इक्विटी वेरी 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 लो है, तो वी टेक ओवर द मॉर्गेज एट अ $0 डाउन। ठीक है, हम इसको $0 पे बोलेंगे क्योंकि आपकी मॉर्गेज है नहीं, आप ऑलरेडी लूज़ करोगे इस सेल पे घर के पैसे, क्योंकि सारे सेल करने में क्लोजिंग कॉस्ट आती है और एजेंट कमीशन आता है जो कि वो लूज़ करेगा। तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है हम आपका घर लेते हैं, हम आपके घर की जगह पे जाते हैं, हम आपके घर की जगह पे जाते हैं एंड हम वो लेते हैं आपको, आपको हटा के आपके शूज़ में आ जाएंगे, आपका लोन हम पे करने लग जाएंगे, मगर यह है कि आपको $0 देंगे, आपके एजेंट को पे कर देंगे एंड आपका कमीशन क्लोजिंग कॉस्ट पे कर देंगे। ठीक है, ये बोल के हम उसको क्लोज़ करते हैं, तो वो बात ख़त्म हो जाती है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर लोन इतना है, जैसे अगर लोन है आई डोंट नो 40,000, उसने हाफ ऑलमोस्ट हाफ घर पे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सेलर के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई आपको $0 हम देंगे, बाकी एजेंट कमीशन और ये कॉस्ट पे कर देंगे, नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इक्विटी है घर में अबाउट 30,000। तो इट्स नॉट गोना मेक सेंस कि हम उसको सिर्फ खाली में रुखसत कर दें। ठीक है, लाजमी हमें कुछ ना कुछ मिस्टर सेलर को भी पे करना है ताकि वो ताकि वो कुछ ले सके, राइट। क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही पे कर दें तो वो बोलेगा नंबर वन मेरा 30,000 का लॉस है यहाँ पे। ठीक है, 30,000 जो मैंने बैंक को पे किए हुए हैं 6-7 साल में, वो मेरा लॉस है, और सेकंड मुझे कोई अभी चीज़ नहीं मिल रही है, राइट। तो वो मेक सेंस नहीं करेगा। या तो आप 40,000 उसको अभी दे के बोलो कि भाई अब मैं आपको कुछ नहीं पे करूँगा एक्स्ट्रा, वो मेक सेंस करता है क्योंकि उसके 40,000 जो उसने लगाए थे वो उसको मिल गए, और फिर आप मॉर्गेज टेक ओवर कर लो, राइट। मगर 40,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, अगर आप 40,000 यहाँ पे डालें तो we'll know कि it's not a small money relative to the purchase price. It's almost 57%, right? आप इतना जो है ना, भले आपके लिए 40 किसी भी इन्वेस्टर के लिए 40,000 इतना सा है, ठीक है, भले वो इतना सा है, बट देखा जाता है कि कितनी परचेज प्राइस है, तो 70,000 की रिलेशन में 40,000 इज़ अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो हम उसको नहीं दे सकते, तो हम फिर वही आएंगे कि हम आपको 10% देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि अबाउट 8,000 होगा। um, let me see. ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे हम आपको 10% डाउन देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 7,000 अभी हमने उसको दे दिया है, और इसी में से वो एजेंट का कमीशन पूरा करेगा, हमारे हम और पैसे नहीं देंगे, इसी में से वो एजेंट कमीशन पूरा करेगा, और क्लोजिंग कॉस्ट तो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको बोल देंगे भाई आप इसी में एजेंट कमीशन पूरा करो, क्लोजिंग कॉस्ट मैं आपका I told सो एजेंट कमीशन करेगा और क्लोजिंग कॉस्ट हम पे कर लेंगे, वो भी हम एंड में यूज़ करते हैं एज अ टैक्टिक। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स गो बैक टू इट। आपका ये जो बंदा है इसका 40,000 है, इंटरेस्ट रेट लेट्स से 5% है। ठीक है, 5% लेते हैं और मंथली हम कर लेते हैं आई डोंट नो 500 कर लेते हैं। ठीक है, मंथली ये जो लोन है ना, ये बैंक का लोन है। ठीक है, ये बैंक का इतना लोन है, तो हमें हमें करना ये है क्योंकि 40,000 की अच्छी खासी इसने कर लिया हुआ है, राइट, अच्छी खासी रहती भी है और अच्छा खासा कर भी लिया है, तो हम इसको सेलर को पे करने हैं इसके 40,000 के। ठीक है, तो 500 हमें ये लाजमी पे करना है जो कि बैंक को जाएंगे। उसके बाद जो ये जो पैसे ना, ये नंबर, ये मिस्टर सेलर के पैसे हैं। ठीक है, 175। तो अब हम अपने अपने नंबर रन करेंगे और उसको देखेंगे किस तरह हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, ओके,
तो जैसे ही अगर आप इस कैलकुलेटर पे जाएंगे ना हाइब्रिड पे, तो वो आपको दो चीज़ें खोल देगा। टोटल सब टू लोन्स, ये वो लोन है जो बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ये वो है जो सेलर के पास जा रहा है, ठीक है। $63, यहाँ पे भी $63 है। होपफुली दैट मेक सेंस। Okay, let me do one thing. Let me take your question because I got a lot of question. Okay, so hopefully this is making sense. अब जब हमारे पास 40,000 को हमने पे करना है, हम पे $63 इस कैलकुलेटर के हिसाब से $63 मिस्टर सेलर को पे कर रहे हैं, और 500 जो बैंक का लोन है हम उसको पे कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाते हुए हमको ये देखना है कि हम कैश फ्लो हमारा अच्छा है या नहीं, राइट। कैलकुलेशन जो कैश फ्लो की है वो बिल्कुल वैसे ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हुसैन से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुसैन। ब्लैक शेयर, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। I want a VW. What is VW, bro? Okay. Now the issue here is that these deals are a little bit harder to accomplish. Okay, a little bit harder to accomplish. Reason why इसका वो इस वजह से कि क्योंकि आपको दो बंदों को पैसे देने, ठीक है। ये चीज़, ये तो बड़ी चीज़ होगी। उसके बाद आपको सारा एक्सपेंस निकालना है, क्लोजिंग कॉस्ट निकालनी है, एवरीथिंग निकाल के फिर जो पैसे बचेंगे वो आपने रखना है, राइट। तो इस वजह से कैश एंड कैश थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसको मेक सेंस करना। या तो हमें सेलर को बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, या तो हमें डाउन पेमेंट कम देनी पड़ेगी, राइट। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम इसको देखें तो 30 ईयर्स में 63 हम पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट। लेट मी ग्रैब माय फोन 1 सेकंड। Okay, so what I was saying is that $63 हम ओनर को पे करें, जो कि वैसे बहुत कम है, आपको पता होना चाहिए। इट्स नाउ गोना बी लुक गुड। हम तो एनुअली हम 600 पे करें, तो हम इसको लेट्स से लेट्स डू 10 ईयर्स, ओके। तो 191 अगर हम पे कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट वुड बी लिटिल बिट बेटर। 191 times 10, 1 second, 191 times 12 times 10 years. Yeah, so 22,000. Yeah, so it is less than what we need, but it can work, okay. बट यहाँ पे अब इशू आ रहा है कि हमारा कैश एंड कैश काफ़ी नीचे चला गया। सो यूजुअली हाइब्रिड डील में आई थिंक व्हाट आई हैव डन इन बिफोर एंड इन्वेस्टर डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि इसमें हम जो है लेट मी सी, अगर देखें इसमें 15 से 18% का कैश ऑन कैश रिटर्न इज अ लिटिल बिट ओके, ओके। 15 to 18% cash on cash return is a little bit okay. So I think this is fine. Okay, so a yellow 15 to 16. So 15 to 18 is a normal return. You can do that. And जो बाकी का जो आपका डिपॉजिट है, जो आपका डाउन पेमेंट है, वो 10% अगर आप कम कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट नॉट इनफ। मगर ऐसा ना हो कि वो एजेंट की कॉस्ट ही ना पे कर पाए, राइट। बट यूजली अगर आप 15 से 10 तक चले जाते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज आपके पास दो चीज़ें हैं, एक बैंक को भी पे करना है और ऊपर से आपको सेलर को भी पे करना है। तो दोनों, बैंक को तो आप नहीं छेड़ सकते, राइट। बैंक का तो क्योंकि आप लोन की उसकी जगह ले रहे हैं, तो बैंक इज़ ऑन जीरो डिस्कशन। मंथली पेमेंट में सेलर फाइनेंस को, मतलब सेलर को आप छेड़ सकते हैं, बोलते हैं कि यार नहीं मैं 150 देता हूँ, मैं 200 नहीं दूंगा, राइट। तो अगर मैं इसको 15 कर दूँ तो 138, right, and then it goes on to 21। अगर 21 रिटर्न आ रहा है तो it's good, but usually hybrid डील में थोड़ा रिटर्न कम होता है, but that's still okay।
वो इस वजह से भी ओके हो सकता है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट अच्छा है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट आ रहा है, आई डोंट नो, 3%, 4% और 1%, इट्स वेरी गुड इंटरेस्ट। फिर एक इन्वेस्टर बोलेगा कैश एंड कैश को मारो गोली, आई विल गो विथ इंटरेस्ट रेट। वो घर सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे बाई कर लेगा, ठीक है। और हाइब्रिड डील यूजली होती है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट, रहने वालों के लिए नहीं होती। रहने वालों का धैर्य, क्योंकि उनको आता नहीं इन्वेस्ट करना, चीज़ें नहीं, तो वो नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की, राइट। तो ज़्यादातर हाइब्रिड डील जो होती है इन्वेस्टर्स की होती है। बट कुछ वक्त ऐसा भी आया है जिसमें आपका जो पर्सन है, जो आदमी, जो बंदा है, वो बेसिकली अगर 500 का उसको लोन देना है, तो उस पर वो 200 ऐड करके दे दे, एक ये हो सकता है। या जो एक नया जो बंदा इन्वेस्टर नहीं है, अगर वो घर लेना चाह रहा है, तो वो 500 का तो उसको लाजमी देना है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि यार मैं 500 और दे देता हूँ सेलर को, ठीक है। तो $1000 का उसका एक्सपेंस आ जाएगा मंथली, और सेलर के पूरे 500 हो जाएंगे, क्योंकि इसने बाकी काम नहीं करने, राइट। ये कैश एंड कैश के रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो समटाइम इट वर्क्स ऑन बोथ साइड, बट यूजली जो हाइब्रिड डील होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि दोनों का देखना पड़ता है, और बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। um, एक सबसे बड़ा मसला आता है ड्यू ऑन सेल क्लॉज। बेसिकली एक क्लॉज होता है, जब भी आप बैंक से घर मांगते हैं ना, घर घर बैंक आपको देता है, तो वो आपको एक एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वो बोलता है ड्यू ऑन सेल क्लॉज, ठीक है। ड्यू ऑन सेल क्लॉज होता है कि अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत करी, फॉर एग्जांपल आपने अपने आपको मैंने लोन दिया हुआ है, ठीक है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे आपको लोन मिला हुआ है 3% का, ठीक है। तो बैंक बोलता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत हरकतें करी और किसी और को घर देने की कोशिश करी, तो मैं ड्यू ऑन सेल क्लॉज को कॉल कर लूँगा, मतलब उसकी आवाज़ दे दूंगा, अगर इस तरह समझ लो। ड्यू ऑन सेल क्लॉज की आवाज़ दे दूंगा। उस क्लॉज का मकसद होता है कि जितने भी पैसे बचे हैं बैंक के, बैंक को अभी फ़ौरन चाहिए, ठीक है। अगर डजंट मैटर कि 1 लाख पड़े हुए हैं, 10 लाख पड़े हुए हैं, अगर आपने मैं बता रहा हूँ कि इसमें लीगल इश्यूज भी होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा उसको समझना है, ठीक है। तो बैंक बोलता है कि मैं ड्यू ऑन सेल क्लॉज कॉल कर दूंगा, या मैं ड्यू की को आवाज़ दे दूंगा, तो उसका मतलब हो जाएगा आपको सारे पैसे जितने आप वो करते हो बैंक को, वो आपको अभी पे करना है, ताकि आप बैंक को पे करो, एंड देन फिर आप अपने लोन से जो भी कर आप फिर आप किसी को भी घर देना है वो देते रहो, ठीक है। मगर जब ऐसा होता है, तो ज़ाहिर कोई भी बंदा एक साथ पैसे, इतने सारे पैसे नहीं पे कर सकता, तो आप फंस जाता है। तो इसी वजह से बैंक ड्यू ऑन सेल क्लॉज हर मॉर्गेज स्टेटमेंट में ये लिखता है कि अगर आपने लोन के साथ छेड़खानी करी, तो मैं ड्यू ऑन सेल क्लॉज कॉल कर दूंगा, तो आपका जितना भी मॉर्गेज है आपको अभी पे करना पड़ेगा, एंड देन यू आर डन, ठीक है, टेक्निकली यू आर डन। मगर उसका वर्क अराउंड है, ठीक है। उसका वर्क अराउंड ऐसे है कि ड्यू ऑन सेल क्लॉज कॉल तब होता है जब आप लोन के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। हम जो है लोन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लोन के जो बंदा है ना उसके साथ छेड़खानी करेंगे, एक तरह समझ लो, ठीक है। तो ड्यू ऑन सेल क्लॉज से बचने के लिए एक बड़ी सिंपल तरीका है, और ये बहुत लीगल तरीका है, और ये जो भी सब टू की डील्स होती हैं, सब्जेक्ट टू और हाइपर डील्स होती हैं, वो इसी पे होती हैं कि हम एक चीज़ खोलते, एक कंपनी खोलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट आपको पता नहीं कि क्या होता है, बस ट्रस्ट एक तरह अगर आप इसे समझ लें, एक तरह से कंपनी है और एक एंटिटी है, ठीक है, गोल सी एंटिटी है। घर आता है, हम घर को निकालते हैं, उस ट्रस्ट में डालते हैं, ठीक है। तो अब घर की प्रोटेक्शन होगी वो ट्रस्ट। लेट मी सी। Okay, Harry, I will look into your deal. Give me just let me finish this concept, and then I'll come back to it. Um, okay, so ट्रस्ट बेसिकली होता है कि एक समझ एक एंटिटी हो जाती है, एक एंटिटी सर्कल सी, ठीक है। उसमें आप हाउस को अंदर डालते हैं, तो हाउस प्रोटेक्ट हो जाता है ट्रस्ट से, ठीक है। तो अब जो भी लोन जिस तरह का भी है वो उसी तरह का है, बस हाउस को आपने उठाया, एक प्रोटेक्शन दे दी, उसके ऊपर एक लेयर आ गई जो कि ट्रस्ट की लेयर हो गई। मेक सेंस करता है सो फार?
तो अब हम क्या करते हैं, वो ट्रस्ट को हम सेल करते हैं। अगर ट्रस्ट समझ नहीं आ रहा तो आप समझ लें कंपनी, घर को उठाया, किसी कंपनी को के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो अब घर कंपनी की ओनरशिप हो गई, ठीक है। तो अब जब कंपनी घर को ओन करती है तो अब कुछ भी करे कंपनी उसके साथ, तो वही होता है, फिर कंपनी को सेल कर दिया जाता है नए बायर को, समझ रहे। कंपनी खरीद लेता है नया बायर, तो उससे होता ये है कि लोन की पोजीशन चेंज नहीं होती, लोन का कोई मसला नहीं होता, बैंक का कोई मसला नहीं होता, बंदा बाय कर लेता है कंपनी, समझ लो, ठीक है, और कंपनी में घर है, तो अब उसका उसका घर हो गया, ठीक है। मगर उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने जो पेमेंट्स हैं वो करते जाने हैं बैंक की। टेक्निकली बैंक को पता है कि मिस्टर सेलर कर रहा है, मगर मिस्टर सेलर कर नहीं रहा, मिस्टर सेलर के पास एक थर्ड पार्टी उसने हायर करी है जो वो बैंक को पेमेंट कर रही है, और वो हम है एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। सो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट इसको कहते हैं ट्रस्ट accusation real set. I don't know if there's any image to show you, but yeah, something like that, right? अब ये जो घर है ये एक एलएलसी के अंदर आ गया है, राइट। एलएलसी वो है जो आप कंपनी कह लो, कॉरपोरेशन कह लो, जिस तरह आप उसको कहना चाहो, तो इसमें आ गया, ठीक है। तो इनिशियल तो अब जो उसका लोन है ना वो सेफ हो गया इसके अंदर। अब ये बॉक्स को उठा के आप किसी को भी बेच दो, इट डजेंट मैटर कहाँ जा रहा है घर, राइट। तो इसी तरह हम घर बाय करते हैं, वरना अगर हम मिस्टर सेलर को हटा के खुद उन जूतों में जाएं जिन जूतों को बैंक ने दिया है, तो बैंक ये बोल सकता है वो क्लॉज कॉल कर सकता है, ठीक है, उसको बुला सकता है उस क्लॉज को। उससे क्या होगा कि मिस्टर सेलर को सारे पैसे अभी देने पड़ेंगे, मिस्टर सेलर तो फंस ही जाएंगे उसमें, ओके। तो हम जब भी घर बाय करते हैं उसको हम बोलते हैं जिसमें लोन होता है उसको बोलते हैं ट्रस्ट एक्यूजेशन। आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं काफ़ी, आपको उसको टेंशन नहीं लेनी, आपका काम नहीं है इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखना या समझना। बस आप उसको जहन में रखें कि इस तरह बाय करते हैं कि जब भी लोन को आता है हम लोन को टेक ओवर करते हैं, हम एक पूरे घर को उठा के एक कंपनी में डालते हैं और उस कंपनी को बाय कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे कोई बहुत बड़ा बंदा पास आउट हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो वो अपनी सारी जायदाद को किसी को देनी होती है, तो वो ट्रस्ट में डालता है, ताकि जो है अगर ट्रस्ट में नहीं डालता और वो पास आउट हो जाता है तो गवर्नमेंट उसका अच्छा खासा 30 और 40% सिर्फ टैक्स में ले लेगी। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, एक कंपनी में डाल देता है ट्रस्ट में। ट्रस्ट में डालने के बाद अपने बच्चों को उस ट्रस्ट का ओनर बनाता है, ठीक है। ऐसा हर जगह होता है यूएस में, इसी तरह वो चीज़ें होती हैं, घर की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, वरना आपको टैक्स बहुत पड़ता है। उसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। तो अगर पेरेंट्स गिफ्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को तो उसका बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो उससे बचने के लिए वो अपनी ओनरशिप वैसी ही रखता है अपने घर को, कंपनी में डालता है और बच्चों को कंपनी के ओनर बना देता है। तो अब बच्चों के पास वो ओनरशिप आ गई इस तरह से। एनीवेज, तो तो ये हमेशा जब भी कोई पास आउट हो रहा है तो वो इसी तरह करता है। हम पास आउट वाली सिचुएशन में नहीं है, मगर हम इस तरह कर रहे हैं ताकि हमारा लोन बच सके, लोन में कोई इशू ना आए, ठीक है, या बैंक को कुछ इशू ना हो इस बात से, ओके। तो इस तरह फिर हम जो है ट्रस्ट एक्यूजेशन कर लेते हैं। अब देखें, सब टू के मैंने आपको बताया था बहुत सारे नाम होते हैं, एक तो होता है मॉर्गेज टेक ओवर। मैंने आपको बताया आप मॉर्गेज टेक ओवर कर रहे हैं, टेक्निकली तो आप उसके शूज़ के अंदर नहीं आ रहे, उसके शूज़ को एक बॉक्स में डाल रहे हैं और बॉक्स आपने ख़रीद लिया, यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज टेक ओवर, क्योंकि आप टेक्निकली तो आप पे कर रहे हैं मिस्टर सेलर का मॉर्गेज। दूसरा आती है ट्रस्ट एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब है कि एक्वायर करना। मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो भी सारे डिस्कॉर्ड में आप लोग एक्यूजेशन मैनेजर्स हैं, आप एक्वायर करने के मैनेजर्स हैं। आप लोगों का काम है कि प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना फॉर द कंपनी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट एक्यूजेशन। और ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया, ट्रस्ट समझ लें, एक कंपनी का नाम समझ लें या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम समझ लें, कुछ भी समझ लें। तो उस ट्रस्ट एक्यूजेशन का मतलब है कि आपने ये घर ख़रीदा विया ट्रस्ट एक्यूजेशन, ट्रस्ट को एक्वायर करते हुए या घर खरीद लिया, ठीक है। और सब टू डील्स, सब टू भी एक नाम है जो है सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है। सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग लोन, तो वो एक अलग चीज़ है ऑन द साइड एज वेल, ओके। होपफुली दैट मेक्स सेंस। Okay, I'll wait for a couple minutes.
ओके, ओके, सो होपफुली दैट मेक सेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया, बट वी विल लिसन टू इन मोर टाइम। बस आपने आपके अभी तक के लिए आपने ये सोचना है कि जब भी यहाँ पे लोन बैलेंस है वो बताता है, तो आपने सब्जेक्ट टू दीज लोन्स, राइट। तो अपने लोन्स की इंटरेस्ट, मंथली पेमेंट और लोन बैलेंस लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो सिस्टम ऑलरेडी कैलकुलेट कर देगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सब टू लोन्स यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। 500 आपका लोन है जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये आपका है सेलर को देने वाले पैसे जो 138 है, वो आपके प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में आ रहा है 138। तो आपको ये दो मिला के 1094 आपको देने हैं दोनों पार्टीज़ को, और आपके पास बचेंगे, आपके पास टोटल पैसे हैं 1300, ठीक है। तो वो सब मिला के आपने सेलर से बात करनी है, कंफर्म करना है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो लोन सारे आ पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में दो लोन होते हैं या तीन लोन होते हैं, राइट। तो अगर ऐसा है तो आप उन तीनों को बात पूछेंगे, और वो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब वो तीनों को लोन हमने पे करना है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। बट इट्स वेरी सिंपल, ये बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस है ना, और मॉर्गेज टेक ओवर है, उनको मिला दो, और उनको बेबी को हुआ तो उसको हम हाइब्रिड बोल रहे हैं, ओके। सेल्फ फाइनेंस तो आपको, आप तो असबर हो चुके हो, आपको पता है कि हर चीज़ कैसी होती है सेल्फ फाइनेंस में। सब टू डील में हमने आपको पहली बात कर ली थी, तो सब टू आपको पता है कि $0 पे हम घर खरीदते हैं, इस तरह का कुछ होता है जिसमें सेलर को कुछ पैसे नहीं आते और नया बंदा सेलर का लोन पे करना शुरू करता है, ठीक है। हाइब्रिड बेसिकली दोनों का मिक्स है। अब यहाँ पे क्योंकि सेलर के इतने ज़्यादा इसने तकरीबन आई डोंट नो 10 साल तक पैसे दिए हैं और उसको अब भी सेल करना है, तो सेलर फंस गया है टेक्निकली। तो फिर हम बोलते हैं ठीक है, जितना आप बोल रहे हो ना पैसे, हम उतना पैसे आपको देते हैं, और इसमें भी 10% आप ऐड कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमको सेलर को इंसेंटिवाइज करना है। हम सेलर को बताना है कि भाई हम आपको 10% ज़्यादा दे रहे हैं आपके घर के, तो उसका मतलब जब हम आपकी छुट्टी करेंगे 6 7 7 7 साल के बाद, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपने वहाँ से उसको 10% कर दिया, 10% डाउन कर दिया। उस डाउन में आपने ध्यान में रखना है कि एजेंट का कमीशन भी वो उसी में से देगा, तो ये बात आप कन्वे कर दें उसको। um, okay, hopefully that makes sense. I'll take some questions right now, and then we'll go into the deals for um, everyone's deals, I guess. How can we decide which to apply hybrid and sub two? Good question. Hybrid and sub two को apply करने का सिर्फ एक ही थिंकिंग होनी चाहिए, कितना equity आपकी है प्रॉपर्टी में, ठीक है। कितनी equity है, अगर आपकी equity 5 से 10% है, इट्स नॉट गोना बी इनफ, इट्स नॉट गोना बी इनफ, ठीक है। तो फिर आपने लगाना है सब टू डील, बस मॉर्गेज टेक ओवर कर लेना है, थोड़े बहुत पैसे देके उसको एजेंट का कमीशन कवर कर देना है, ठीक है। अगर इक्विटी है 20 30 40% या उससे ज़्यादा, देन यू हैव टू डू आई थिंक मे बी नॉट इवन या 20% से 90% या 100%, जो भी है। तो 20% equity है, then good, you will do the hybrid. Okay, equity how much? Like 20%. You can start with 20%. If the equity is 20%, you can do the hybrid deal. If the equity is less than 20%, we still have to calculate a little bit, but you can say that okay, agent की commission क्या है, closing cost क्या है, और क्या डाउन पेमेंट जाएगी, वो सब मिला के आपको देखना है कि भाई एजेंट कमीशन 5,000 जा रहा है, डाउन पेमेंट है 10,000, और क्लोजिंग कॉस्ट 3 4 2% होती हैं, जो कि आपको कैलकुलेटर में दिख जाएगी यहाँ पर। तो आपने उसके उसी के साथ साथ फ़ौरन से उसको भेज देना है। 138 payments to a seller in this case per month, yes, yes. So this 136 is the seller का, इसमें दिख रहा है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 138 138 ये रहा, राइट। 138 ये रहा जो कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, ये सेलर के पास को जाने का है, और ये टोटल सब टू लोन्स ये बैंक का वाला है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा बैंक का लोन और ये रहा सेलर का लोन, तो ये दोनों मिला के हमने
कितने बन जाएंगे, 600-700 बन जाएंगे, और सारे एक्सपेंस मिला के $1094 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको घर को इसको बच रहा है $226। Okay, hopefully this makes sense. Hamad, I have a question for you. um, I just got a text from investor. He's asking a couple questions. I don't know if you know this or not. Um, for this for your deal, he's asking, can you please provide the following details? Is this property vacant or not? Hamad, are you here? I just need to provide him few details. Hamad, if you can hear me, please let me know. I have few questions for you. Okay, anyways, um, तो बेसिकली इस कैलकुलेटर की तीन चीज़ें थी, हमने तीनों कवर कर लिए। तो अब हमें इतना इशू नहीं होना चाहिए हाइब्रिड करने का। अगर हाइब्रिड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछते रहे, मैं आपको सिखाता रहूँगा दोबारा से, एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर। ओके, तो बेसिकली इस कैलकुलेटर का जो सारा मकसद था वो यहाँ पे ख़त्म है, इन अ सेंस कि आपको उन सब चीज़ों के आगे मे बी इन अ फ्यूचर वी विल डू कपल मोर थिंग्स विद दिस कैलकुलेटर, बट दैट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बहुत कम उसमें आता है। Saber, what if the property is great, but basement walls need some work? Basement walls need some work. Can we do the seller? Can we do the seller finance on that end? Basement walls. The thing is, अगर देखो मसला आता है कि बेसमेंट में अगर बहुत बड़ा मसला है, अगर बेसमेंट की वॉल्स में क्या मसला है, इज इट अ क्रैक, उसमें क्रैक आया हुआ है या लीक हो रही है बेसमेंट, देन इट्स अ बिग इशू। क्रैकिंग और फाउंडेशन में अगर यूजली फाउंडेशन में जो मसला आता है ना वो बहुत बड़ा मसला होता है, वो एक छोटा मसला नहीं होता। तो उसका मतलब है आपको पूरा फाउंडेशन उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। देयर इज सम वर्क ही इज सेइंग। वो अब ये सम वर्क का आंसर तो खैर इंस्पेक्टर ही दे सकता है, हम तो नहीं कर सकते इसमें कुछ। बट आप करना क्या चाह रहे हो? आप उसको सेलर फाइनेंस देना चाह रहे हो, ये बोल रहे हो, या कैश में आपको देना है, ये पूछ रहे हो? सेलर फाइनेंस का पूछ रहा हूँ, ऑफर दूँ? आई थिंक यू कैन। अच्छा, उसमें ये चेक कर लेना उसमें कोई रह रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई बंदा रह रहा है देन इट्स गुड फॉर सेलर फाइनेंस। अगर नहीं रह रहा, आई वुड प्रेफर इट टू बी द कैश, ताकि हम उस मसले को फिक्स करके फिर रेंट पे दें। और क्योंकि अगर लीगल भी नहीं होगा ना, अगर वो उनके लिए लीगल इशू भी हो जाएगा बायर के लिए। What about our equity? How do we know at the end of 7 years we will have 25 percent as you applied 15 years? Yes, so अगर इसमें टेक्निकली ऐसा है कि क्योंकि आप दोनों को पे कर रहे हैं, तो आप सैलर को तो आप पे कर ही रहे हैं, ठीक है, और आप लोन भी पे कर रहे हैं, तो टेक्निकली आपकी इक्विटी बहुत आराम से बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना मुश्किल क्यों है, वो इस वजह से मुश्किल है इसमें कैश ऑन कैश, क्योंकि आप इतने सारे पैसे दोनों पार्टीज़ को दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इतनी सारी इक्विटी भी बन रही है, राइट? तो एज एन एग्जांपल, अगर आप 500 को मल्टीप्लाई बाय 7 ईयर्स करते हैं, 500 को मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम्स 7 ईयर्स, तो आपके बैंक को आपने 42,000 दे दिए, ठीक है। और अगर आप अभी कितने दे रहे हैं हम इसको, 138, 138 टाइम्स 12 टाइम्स 7, और मिस्टर सेलर को आपने 11,000 दे दिए, तो 42 प्लस 11 52, और घर 70 का है, तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी।
फिर यू सेल्फ फाइनेंस करना ईजी होगा, राइट? क्यों? इसी वजह से कि आप दो लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप जितने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं आपकी उतनी ज़्यादा इक्विटी है, राइट? मगर मसला बस ये है कि आपका कैश एंड कैश इसमें कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता. Which property are you asking me for? I'm asking about the one 60,000 one. Do you know if the property is vacant? I'll send you the questions. Check the discussion you had with the seller, agent, sorry, and see if you have the answers or not. Okay. If you don't have the answer, then I will call the agent and speak to her and see. Uh, Presently, this property has a tenant until the home goes under contract. Okay. Okay. Sounds good. Okay. Guys, there's no other questions. I can go into um, I can go into the taking questions. What if the whole property is rehabbed but some of the work remaining in the foundation? So yeah, if the property is rehabbed, I don't think it will be a problem then. Yeah, then you can do. Yeah, अगर rehab उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने अगर वो फाउंडेशन छोड़ दी है तो I don't think it's a big problem. तो आप उसको सेल्फ फाइनेंस की ऑफर दे दो. बट मसला ये कि अगर रिहैब उन्होंने करी हुई है तो आई थिंक देयर इज गोना बी अ लोन ऑन इट. तो आप उसका लोन चेक करें कि मैंने बताया था ना, रिहैब हमेशा कोई भी इन्वेस्टर करता है तो वो लोन के पैसों से करता है, खुद से नहीं करता. तो अनलेस कि उसने किसी भाई वगैरह से लोन लिया हुआ या फिर खुद से पैसे लगाए हुए, तो एक वो डिफरेंट बात आती है. Said, is it important to ask commercial property agent for loan on the property? Well, it's important if you're doing a mortgage takeover, right? अगर आप उसको सेल्फ फाइनेंस की ऑफर देते हैं और वो मना करता है तो आप पूछें उस पर कि भाई क्यों मना कर रहा है. अगर वो बोलता है कि इस पे लोन है, देन यू आस्क यस. मगर आप जस्ट सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं और कोई लोन नहीं है, देन यू डोंट नीड टू आस्क. Bro, yesterday I joined your committee but my card didn't support international. So then I talked to Harry and he said that send your agent details to me. Yeah, this is a one problem I've seen with a lot of people. A lot of people are saying like they don't have a international card. I think you have to have a Visa or Mastercard for this to happen. I don't know, guys. People in Discord, tell me if you have any solution for this. जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है और वो और उनके पास आई डोंट नो कार्ड नहीं है, तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं? या तो हम किसी को फाइंड करें जो I don't know what it says. USE Azad Sada Pay. I'm not sure what this is, but oh, it's Sada Pay have virtual card for international transaction. Um, Hussein, I think this is a good thing. Sada Pay, SADA Pay, has virtual card that you can use. Um, it's funny how you're saying Sada Pay. I don't know how to else Sada Pay or Naya Pay. Sada Pay and Naya Pay has the virtual cards. Okay. I guess this is a good information. I need that because I get questions on this so many times. Um, yeah. Hussein, did you hear that? If you use Sada Pay and Naya Pay, they have the virtual card that you can use to do the US transaction. प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि हम लोग कोई और चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस पर टैक्स लगता है हमें. तो अगर आपकी आई डोंट नो $4 सब्सक्रिप्शन है तो 50 सेंट्स टैक्स है, तो वो मास्टर कार्ड और वीज़ा के अलावा का काम नहीं हो सकता. Okay, give me 1 second, guys. I'm gonna get Hamad's information on the house to the investor so that he can stop texting me.
Okay. Yeah, thank you. I actually wanted you to text me in the chat so that um one second, guys. Let me figure this out because this deal is very close to finishing, and I don't want to hold it for long. How can we set up a showing? How can we set up showing? Yeah, don't worry about the showing bit. We basically have to ask the renter. We have to ask the renter. Renter will show the showing. A renter will give us the time. The time, then agent will give it to us, and then we will hire someone there, and they will go into the property and figure it out. Anyways, again, thanks Harry and Heather for Sadap, Hey, and Nayape. I will actually put it somewhere or give it to my team so they can tell other people as well. We were thinking that maybe we're gonna come up with someone who can do this transaction. We can send the money in Pakistani rupees and they can use their card, but it's a problematic for whoever's gonna do it. So we didn't really think of that. Anyways, let's go back to the questions. The favorite time. This time we're gonna call agents and talk to the rude people, and it's gonna be fun. Okay. I don't know. There have so many questions. I don't know who said first, but I remember there was a question in general that my team was saying that I need to answer. Hashtag general. Where's general? Okay. Guys, other thing also, I don't know if you guys have seen it. There is a video of Discord was recently got updated. So if you have questions about Discord, अगर आपको समझ नहीं आ रहा Discord को किस तरह करना है, किस तरह यूज़ करना है, तो उसका full step है, step by step guide Discord पे. So you're welcome to have a look at it if you don't know how to use Discord. ठीक है? But again, you guys are pretty smart. Uh, Usually वो उन लोगों की है कि जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, yeah, they don't have any clue what they are doing as of now. And then they learn Discord and get to it. Okay, hashtag general. Okay, um, let's see, did I miss anything here? I responded. Ahmed, yeah, Ahmed, your deal, I have to call your deal too, right? Yeah, Ahmed, your deal is very close. I don't know why she's taking so long. Let me call. What's her name again? I should have it. Gracia? Gracia. Yeah, let's talk about it. God. I hate this. Hey, this is Gracie Coronado. Your call is very important to me. Please leave me a brief message and I will call you back, or you can also text me for a faster response. Thank you. Have a great day. Hola, has llamado a Grecia Coronado. Gracias por llamarme. Tu llamada es muy importante para mí. Por favor, déjame un breve mensaje y te regresaré la llamada. O si gustas, mandarme un mensaje de texto y te contestaré más rápido.
Hey Grace, this is Syed again. Just following up on our discussion on the property. Let me know when you have a chat, when you have a time for a quick chat. We'll go from there. I'll shoot you a quick message as well. Take care. Bye bye. Let me show you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 calls to this lady and about 3 texts. No respond. I guess she picked up once. Once. Yeah, there's a minute 47 chat. So she picked up once and then she's been ghosting us for since then. But again, even though I'm calling, but what I have to do, I don't have to be on the bad side of the agent, okay? If I call today, I'm not gonna call today at all. I'm not gonna do anything at all. I'm gonna follow up tomorrow or the day after. Maybe not tomorrow because if she's doing that bad, but I will not leave her alone. No matter what happened in the world, I'm gonna keep following up with her as long as I can, as long as I have the deal. ठीक है? तो आपने इसकी कोशिश नहीं, इसको वो नहीं है कि भाई मैं बार बार कॉल करूँ, तब एजेंट फिर गुस्से में आ जाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपकी डील को वो टोटली रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने आज बात करी है, तो आप कल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फॉलो अप करो। ओके, मेक श्योर कि आप फ़ौरन मैसेज टेक्स्ट ना करो। दिस इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि वो लगेगा आप लोग स्कैम है। इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है टेक्स्ट कॉल ये सब करता बैठे। ओके, Hussein, Sada Pay is the pay you can use to get a virtual card and you can use it from there. Okay, it's very simple. They're saying Sada Pay and Easy Pay, I think. Hey Grisha, hope you're doing well. Hope you're doing well. Just following up on our discussion last week. Best. Okay. So Ahmed, your deal is good to go. ये एजेंट का मैसेज है, वो POF मांग रहा है LOI के साथ. I understand your concern regarding sharing the financial information. Typically, proof of fund can be provided in a redacted format or through a bank letter or a protect your privacy. Before I present anything to my seller, I do need a written agreement outlining all terms along with the proof of funds so we can properly evaluate the offer. This is standard practice to ensure the smooth and serious transaction for both parties. Once I have that, I'll be happy to review it with the seller and get your response. अभी इसे क्या कहूँ मैं, मान ही नहीं रही. ओके, उसको बोलो कि ठीक है, हम आपको POF भेजते हैं, बट इसको आपने सेल्फ फाइनेंस ऑफर दी या कैश की ऑफर दी है? I don't know where you are, but chats. Dina Michael, yes, we'll call Eamon. Did you give him a cash offer or give her the cash offer or the other offer? I'm getting a call. That's not 313 number. Hello, this is Syed. Hi, this is Andrea Hey, at Andrea. HSBDX Real Estate. Hey, Andrea, how you doing? Okay. I was just wondering where we're at with the, Yeah, I was. are you still in? Yeah, I'm just in a meeting right now. I got your email, I think today. You sent me the signed contract, right? The signed, I think it was paint stuff.
Oh, yeah, the disclosure. Yeah, That's there's. what happened was, the previous one had the wrong address on it, so I sent you a Oh. new one with the right address on it. Oh, so do And I you want me to also sign sent you again? the signed contract. Say that again? You want me to sign the disclosure again? Is that what you're Yes, saying? Okay. yes. And Okay. also, I think I did send you the signed purchase agreement. Didn't you send us a second one this time? Um, second one, yeah, I sent it through the software, right? Like it automatically sends the contract once it's Yeah. signed. Yes. Okay. So do you want me to send it again to you? Is that what you're saying? I think, could you just check and see if it's the right one, because the first one sentence wrong, and then, or it needs to be changed. And then we sent the second one. Sure. Give me one I second. think we signed that one. I think we're going to sign that one. Yeah, I got it. I got everything. I think on Saturday, my attorney told me, and he said that everything is good. There's no issue there. We Okay. also signed the painting in the contract. Even before you sent it, actually, we signed that because we know you're gonna send it. So we just signed it, and then you send it after, and then I signed that after as well. So the purchase Okay. agreement is good to go. There's no issues there. It's signed by both parties. He has looked into it, so we are good to go on that. The paint, And, the lead base form also, I believe I signed it, but I'll do it again if you have sent it to me again. I'll fix. yeah, because it has the right address on it. The other one had the wrong address on it. Okay, yeah, I didn't catch that. Yeah, I see. It's 16654 Sonata Rose Drive. Yeah. Yeah, Santa Rosa, that's wrong. So, now I sent you the one with the Indiana address on it today. That's the one I sent you. Right. Let me check. That's the one I just sent you. I don't think I got it. I got your email with the with the wrong one and the purchase agreement, but like, is it gonna be? Yeah, I just sent you a new one today. Oh, interesting. The one I got the one I got your email attached are the signed contract of street. Let me know the question. I believe my client signed the purchase agreement twice. Also, there's any Right. inspection. So is this the email you're talking about? No, it's another No? one. It's one that's after that one. I just sent it today to you. Interesting. I'm not getting. Maybe it's in spam. Let me check my spams. Yeah, just, check it Interesting. I actually don't see it at all, unfortunately. The only email I have today was around 8 in the morning, our time, and that was Yeah, just with, today? yeah, today. But that had the two document. One is a purchase, that's correct, and the other one lead base, but it has a different address. And that one I already signed it. It I know, but that's the one, I want you to go, that's the wrong address. So Right, I sent you right. a new one with the right address. By itself, it was just that particular thing, that base paint. Yeah, but I think it might have been misplaced or switched. So it might have been switched because I still have the uh, Sonata Rosa Drive one in my email that was sent today, about 2 hours ago. It shouldn't, but it should say Indiana. Yeah, When I looked at the document before I sent it, it said Indiana Street. no, it says 16654 Sonata one. The purchase contract is good to go. It's just that Right. the lead based one has still the old address. So like, do you want me to just kind of write it on the top of the paper type thing? Yeah, scratch it out, and yeah, right. Yeah, I can do that. I Scratch mean, it out, I can just scratch it out put the and right address on it, and just initial it. sure, let's do that. And then I will send you back this so Okay. you have it as your record as well. Okay. Okay, that's fine. I don't know. And for inspection, Documents do strange things. sounds good. That's all right. Inspection. Yeah, for inspection, I'm thinking I'll get back to you today. It should be this week sometime. Okay, it shouldn't be longer than that, but it should be Okay. this week sometime.
I'm hoping before it would be around Wednesday or Thursday. Um, so if you can put that in their mind that we will come in on Wednesday or Thursday, that'd be great. Um, Usually it's fairly quick. We don't bother anyone, disturb anything. Just quickly go in. I think there's a couple people that will come in to inspect the property so that we can get out because it's currently rented, right? Yeah, it's right, and it has a tenant in it. Yeah. So I don't know that they're renting it, but it has a tenant in it. right. So that's probably like we don't want to invade their privacy either. So um, Right. we'll check it out. Do you know, just out of curiosity, do you know the age of HVAC or heater, water heater? Um, she said that it was, pretty updated and it was updated, so it's Okay. been maybe 4 years old, something like that, three, Okay. 4. So 3 4 for HVAC and 3 4 for water heater, right? Yeah, I'm assuming, yes. We get Okay. them both done at the same time usually. Right. If Right. we Yeah, that's can. what I was thinking. Um, And what about roof? I checked the Google view and things like that. the roof is never been replaced. 12 or 13 years old. Okay. It's never been replaced. Okay. Sounds good. Yeah. No worries at all. We'll just when we go in, we'll have a look. I just had a curiosity because one of our team member drive by, so to kind of check the property. But yeah, we didn't Yeah. go in or anything. But yeah, so I will sign the lead based again and send it back to you. Okay. Okay, what else? Okay, inspection date, okay, and we still don't know yet, and we'll put that, today on that, Yeah. okay. No, my city was Mhm. talking to a title company, and they were saying that your fee is going to be taken out automatically, they're talking about me, from the sale price during closing. Is that true? That's correct. So usually what happened when we pay the money, the escrow holds it, and then escrow before sending to the seller, it distributes the fees whoever has a contract for whatever, right? So escrow will Yeah, maybe so get how in do you, touch with you. okay, because they need, they need a copy of my Yeah. contract Yeah, you got in it. order to You know got it. what my fee is. Yes. So the title Okay. company, They will contact me? yeah, so basically the reason we need all the contact information in the contract is also that, and we submit it from our side as well. So our transaction coordinator job is to do all that, right? So they will get the contact Yeah. information and send it to escrow. The title company then do all the work, distribute whatever, like if there's any lien on the property and things of that nature, they will check and then send the money to those people um, Mr. Seller owed to them, right? Like if there's a, I don't know, solar lien or That's good. whatever it's called, they needs to be taken care of that. That's good. Yeah. Okay, okay, do I need to send my contract to you, or do I have to wait for the title company to contact me? That's a good question actually. I don't remember taking any contract from the agents yet, but if you want, you can send it to me. I can just send it to the like the transaction coordinator, just in case. But I think they will Okay. contact as well if they need anything. But yeah, so we like title company is the one that will distribute all the cost to everyone. So there is no like Right. again we have a contract with them and it's all in writing, so there shouldn't be any issues with that. Yes, okay. I just, need to know, do I need to send it to you? I think I probably should send it to you, so you send it to me, that way I have it. Yeah, I guess if you send it to me, it'll be just easier. They will not have to reach out to you, and they will just go with that. But either way, it's fine if you want to have a chat with them too, so they can also call and go from there. Okay, well, at least they'll have my number, they'll have my information. Right. It's on the contract. Right. But if not, yeah, you just give them my number and then call me. Sounds good. We can do that as Leave a well. message if I don't answer the phone. They leave a message if I don't answer the phone. Yeah. No, they usually send you email and then they call you the following day. If you don't respond to the email, Okay. so it should be fine. I think All right. it's pretty set there. Okay, I'll Okay. contact my client and tell her that Sounds in good. touch with us about what day to Yeah. do the inspection.
Sounds good. And I should be able to get back to you with the exact date and time shortly, in probably a day or two, not more than that. Okay. Before I let you go, Okay. anything missing from my end? I've signed all the paperwork, right? Just that one that I was trying to correct, Right. which was the, I'll try to send it again to you, but go ahead and scratch that out and Sure. put the other address in. Yeah, I'll I will just. try to send it again to you, but, Okay. if it doesn't, it's, switches like it did, like you said it did, then Mhm. I don't know what to do after that, is that, we can just use that other contract, the other one we had. That Sure. you got across the extra side, put the blue one in. Yeah, that's okay, you can mark up that, something on that, like that. Okay. Okay, but, okay. Okay. Then I'll put Sounds that good. in. Thank you so much. We'll talk soon. All Bye bye. right. Bye. Okay. Give me one second, guys. Let me send this information over to the TC company. Guys, if you don't know what TC means transaction coordinator. Okay, those are the people that focus on getting everything under writing, and then the coordinator will go and send everything to the escrow. Escrow is basically like a big company, like a government entity that takes care of जो कि take care करती है सब लोगों की, right? जो जो इसमें पैसे जिन जिन के पैसे देने होते हैं उनके, और जिन जिन के पैसे लेने होते हैं उनकी, ताकि मिस्टर सेलर के पास पैसे जाने से पहले सारी चीज़ें कवर होती हैं, ताकि ये ना हो कि मिस्टर सेलर पैसे लेके भाग जाए और ना दे, या फिर माइंड चेंज हो जाए, it could be anything. तो टाइटल कंपनी करती है, तो एजेंट को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर सेलर ना पे करे तो क्या होता है। तो मैं वही बोल रहा था कि इसको सर उसको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मिसेस सेलर के पैसे जाने से पहले ही वो सारी चीज़ें पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पहले ही। Okay, let's go back to where we were. Okay, हम थे डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड की बातें कर रहे थे, एंड we were talking about Ahmed's deal. Yeah, self-finance. क्या बात कर रहे थे हम? Yeah, foundation issue, but it's completely rehab. अगर completely rehab है, then go with that. Go with seller finance, because हम tenant डाल सकते हैं और उसके बाद उसको कर सकते हैं, is no issue. Foundation का hopefully is not a big issue कि वो it's gonna be issue, it's gonna be a big, but again हम इंस्पेक्टर भेजेंगे तब देख लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है। वो मांग रही है POF। ओ अच्छा, उसके बाद हम POF पे चले गए थे। करेक्ट राइट। आपने इसको बोला था कि हम जो हैं POF में से हम उसको देंगे POF वाला। आई थिंक इट वाज इन जनरल। राइट आई फॉरगॉट। या तो आप इसको ये करें, इसको बोलें कि sounds good, what I'll do is I'll have my team send you the proof of funds and a seller finance contract as a template, okay? Because it would require them to hire an attorney and all that, so it's going to cost us a lot of money. So we will send you the proof of fund and seller finance template contract, just so you can have a look at it and present it to Mr. Seller. Okay, then you present it to Mr. Seller, Mr. Seller agrees on it, we will then send you a formal written contract for Mr. Seller to sign. Okay, and ये standard practice नहीं है, by the way. He is saying this is the standard practice. Standard practice कि हम पहले ये मांगते हैं वो मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये करने में टाइम इतना लगता है कि कोई भी बोलेगा यार छोड़ो, किसी और डील को देखते हैं, तो इस वजह से नहीं करता। बस आप उसको बोलो कि ठीक है POF और POF and the second thing, the template contract, we will send it, but not actual contract, because it requires money for us to get the attorney to write the contract for seller finance. Okay, तो बोल देना we will send a sample, and then
Perry, you can text me for an update. I'll get someone to send the things for you. Okay, hopefully that makes sense. Hopefully that makes sense. Okay, let's go back to the chat and see who's next. Um, okay, the person who mentioned Sada Pay and Naya Pay, kindly ask him that Easy Pesa Visa card allow. I don't know. He's asking Easy Pesa and Visa card allow or no. I don't know. Okay, from Pakistan, Pakistani, Ahmad Easy Pay, Heater. What about Tony? Tony? Tony. Tawny. Tony has been ghosted, bro. Is Tony the same person on Virgo Street? Let me share my screen, guys. Change the stream. It's 274. Yeah, it's this one, right? Virgo. Yeah, this one is the one that said that she's gonna get my seller to call me. Problem is like it's such a small rent and stuff. I called him Thursday or her. Let's call her again. Hi, you reached Tawny with Doty Real Estate. For faster response, please send a text, otherwise leave a message. Thank you. At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Hey Tony, this is Syed again. Just following up on the property at I think it's Virgo Street. You mentioned the seller might be able to give me a call. I'm not able to receive a call yet. I'm wondering if you can kind of let them know to give me a call, and we can discuss the numbers on it, and we can go from there. All right, we'll chat soon. I'll shoot you a quick text as well. Bye bye. Okay. Hey, Tony. Pick up your goddamn phone. Hope you're doing well. Just wanted to follow up on Mr. Seller's request to speak with me. Looking forward to it. Best. Okay, so sent of the update. Dina Michael. Yeah, let's call Dina Michael. Deanna Mitchell. Naya Pay is better. I'm with her for a month. Yeah, so Naya Pay is better, by the way, guys. Okay. Okay, I'm gonna go with the Eamon's question now. Where is Dina? Dina Michael. So this is the property. Dina's contract number is following. It's gone off market. They took it off market. Why?
was on market, I'm pretty sure. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hey Dina, hope you're doing well. This is Syed again. Me and Ayman was working with you, or I guess the previous agent, on this property, Wo- Worley Lane. I'm just wondering what's the status on it. I believe we have spoken to each other, I think last week. You mentioned that you'll give me a call to kind of give me an update on what's the status of the property, whether it's pre-foreclosure, foreclosure, and then we were wanted to run some numbers on it, on that. Let me know if you can give me a call back. That would be great. I look forward to it. I'll also shoot you a quick text, and hopefully Eamon can also do a follow up with the email as well. All right, I'll chat soon. Bye bye. Eamon, send her the email. Yeah, so it's off market. So technically, if it's off market, it's a good thing because no one else is gonna go after this, right? The other problem is if it's off market, then there's no use of the agent. Maybe both agent um, got pulled out, or bank said like, or whatever. Like, I don't know. Owner paid the money, so he no longer needs to sell the house. I don't know what really happened, but send an email to the lady, Deanna Mitchell, and see what is the status on this property. I will send her a text as well. Hey Deanna, hope you're doing well. I just wanted to follow up on our conversation from last week. You had mentioned that you'll give me a call and kind of give me an update on this property. I do see that this property has gone off market. Would love to know what's happening with this one. Thanks. Looking forward to speaking to you. Best. Okay. I'm gonna say me and Eamon, because she remembered Eamon more than me. So okay. So I sent her the text for that. I want to give you an update on the deal you discussed with Dylan and Friday before last. It was the 8 unit apartment on Crexy 100 550. I had made them offer 10% above asking price with 10% down, including master power, although at this time I didn't have an estimate of the rent. You advised me to tell them, just tell him I will have my manager reach out to the company for credibility. I think the monthly payment needs to be changed since I miscalculated. Yeah, but other than that, we should be all good for the offer. Sent a link. I don't have a phone number or company name to log in. Could you please check this since I can continue the conversation? So I can continue the conversation. And there's a link. Sure, I will open the link. Yeah, so they sent the link. It's probably for. Wait, it's a correct link though, is it? Share XYZ in the porch. Yeah, this was the property, I remember. 256 days on the market, 8 units, and Dalton. Yeah, we spoke to Dalton. This link is opening in Crexy. I wonder why they have a Crexy link on that. Yeah, I know the link you sent, it's actually opening. It says share.google, all that, but oh, it's a park one. One second, maybe I clicked on the wrong one. Yeah, there you go. There you go. Okay, so this is the one that you were asking. So, guys, sometimes this happens where the information they hide it behind like their company's website. Okay, sometimes this happens, so you have to go in and kind of put your emails in it and then get access to it.
how to access the doc center. Sign up now. First name. Where's my phone number? This email already exists. Okay, okay. Oh, it does exist. What is this? Oh my god, that's a lot of work. Are you kidding me? What is this? Okay. Finally. Okay, so these are the documents. Let's see. I hate this. They do it in such a. So technically, tax information, I don't need it. I need T12. So rent roll, I need. T6, I don't need a 6 month का rent. I need the rent roll. So ये है 2026 का, 2025 का rent roll है, 2026 का rent roll है, 2026 का P&L, profit and loss statement of 2026. 126 TXCOE. I think that's probably a good one. Okay, so what they're saying is the total income. So Eamon, basically when you open these documents, one thing you're looking for is the net income. Okay, total net income. अगर net income इस तरह ब्रैकेट में ना, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव net income है. इसका मतलब they lost the money. ठीक है, अगर ब्रैकेट में नहीं है तो इन्होंने $947 बनाए हैं. ठीक है, तो अब वो लॉस क्यों किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई कोई लीक हुआ होगा, कोई इश्यू हुआ होगा घर में, तो उसकी वजह से वो उस महीने के लिए नेगेटिव में चलेगा. बट अगर टोटल देखें फरवरी से जनवरी तक, फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक, टोटल जो नेट इनकम है राइट हियर 22,000. ओके, सो वी आर गोना रन नंबर्स ऑन 22,000. वी डोंट नीड any other documents. Okay, I think what we can do, we can quickly run numbers on this. Close, copy. Okay, 22,000. Their asking price is 550.
We did give him 10% up, right? So let me go back to Sarah Finance. 10% up, 10% down. So 10%. Ten percent down would be 60,000. Thousand. So no loss. The net operating income is 22,553. This is actually, I just wrote it for the sake of writing it, but technically it's the annual. So I have to divide that by 22559 by 12. Okay, so $1,876. 1,879, it says, or 78 we can do. Okay, now it's, of course, it's going to go red because we have this cost, right? Because we have to take them out. अगर हम नेट इनकम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें हम कोई भी खर्चा नहीं लगाएंगे, सारे खर्चे ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स भी टेकन केयर ऑफ है, ये पैसे भी टेकन केयर ऑफ हैं, तो हमको कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है. Everything is zero. We are still negative. Okay, so agar amortization is 50 years, let's do 60. Five. Let's do 70. Okay, so I think 600 or so dollars we can give him per month, and at an over asking. Eamon, what's the status like? What did you tell him as the monthly payment? I want to see, what did we tell them at monthly payment? I think you sent an LOI. Yeah, so monthly payment. No, that's Dalton. Yeah, so basically monthly payment would be around 600, and we will take about yeah, about 8 years of payment. Yeah, we'll do about 8 years of payment, or at a 60,000 down, uh, this much up. So what I'm gonna do, Ayman, I'm not sure, I didn't get a response from you, but I'll take a screenshot and send you these numbers. Second new. That's Ayman. Okay, Ayman, I have answered your questions. Okay, I'm moving to the next person. Next in lineup is Heather. Let me check. 180,000. No, take a look at this house. Agent said there's no measure needed, but I think it needs some repairs. Let's see. That's weird. But why is the house has a wood, not a plywood? I mean, this house needs repair, yes. Yeah, this definitely needs to be changed. Is it a hole? I think it's a hole. Yeah, it definitely needs. It's not terrible, but it definitely needs some work.
They try to take good pictures and edit it well, but how can this be not repair? What does this mean? What to do if the Crexy shows sold and still make an offer? You cannot do 0.70. You have to go 0.6 or 0.5. Everything else is good. I don't see any other issue in terms of location. Location, it's a big city. It's a decently big city, I know. Yeah, so it's a big city. There's no issue there. There's an issue with the crime, but not that much. So 1986 sold. Okay, so that means he has 100% equity in this house. Okay, give him cash offer. Give him cash offer because in 1968 he owned. That means he probably bought it for 30,000, 35,000, not even a dollar more. So even if you give him 60, I don't know, 60% of 40% off, he will take it most likely. Okay. So yes, I'll check your messages for him. Okay, Harry, I'll move on to the next person. Note. Let me see quickly this one too. We can offer agent as agent said the home is not occupied, as note in the photo. This house was damaged by fire and we are not aware of the mortgage at this time. Oh, it's a house. It's a fire damage. Fire damage is pretty bad. Oh. So why are they selling for this much amount? The thing is, it's some rooms are good. Like outside looks good, right? No issue there. Inside basement looks good. Is there a leak? If there's a leak, that's an issue. But again, fire here, so this needs to be changed. They put metal rods. Yeah, this house is probably not worth it for what they're asking. 110%. I even worry if you can give them 50% off because he's gonna go down a lot. He's gonna go down a lot in few days. So Heather, I think you shouldn't give him offer right now. Wait for a little bit. Let them sit on the market for a little bit. Let's say I don't know, 20 days or so, and then give them the offer, because he's currently listing this house at sale price, right? Because if you see it, the estimate is saying 280, and if we list the house is in perfect condition, okay, and if we list the house at 280, it's gonna sell at 200 at 210, not even 219. So he's listing on 219 at this stage. It's a very bad offer. Even if you give him 50% off of this number, it's still not gonna work. So wait for him for a little bit, put him on the follow-up, and tell him like we'll reach out to you again type thing in a bit. Yeah, so it's not worth it at this price. This house is bad as it is. 2014, so that means they have enough equity. Okay. Technically we cannot offer anything because he's right now he's delusional. Delusional मतलब कि वो ड्रीम कर रहा है, राइट? घर की वैल्यू ही इतनी नहीं है जितनी उसने लगाई हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ये घर हाउस डैमेज, फायर डैमेज है, प्लस इसके रूम और सब चीज़ों में फायर है, राइट? ही हुआ ये होगा ये कि इन्होंने किसी को बुलाया होगा कि घर को आके फिक्स करो, उसने आके एक्सपेंस दे दिया होगा 100,000 का, तो वो बोल रहे हैं इतना ज़्यादा पैसे लगाने से बेहतर है मैं इसको सेल करके इस घर से निकल जाऊँ। तो ये वो काम है। तो अभी उन्होंने खुशी से लगाए मैं इतने पे घर, इट्स गोना कम डाउन टू एटलीस्ट 100,000, और फिर 100,000 का 50% हम लेंगे, then it will make a little bit of sense. April 27th, that's today. Name, number, second. Let's see. It is foreclosure.
हैदर foreclosure issues are आपको मैंने बताया हुआ है कि असल में बैंक के पास होता है ये घर. So and that's why you can see nobody is touching it. तो बैंक उसको ऑक्शन करेगा और ऑक्शन के लिए आपको प्रेजेंट होना लाजमी होता है. तो आई थिंक ट्राई नॉट टू डू foreclosures. ओके, foreclosure में काफ़ी इश्यूज होते हैं और घर की कंडीशन कुछ नहीं पता होती और इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकते टेक्निकली, बैंक करने नहीं देता. Not be offered the 93K. I don't know if 93K they will take it. Yeah, so bank will not take it. That's the problem. Bank doesn't negotiate at all. Bank will wait, and then he will auction it. That's all they will do, because they're not gonna get, because they have to show legally that they did a foreclosure. Okay, Heather. So I think when you guys make sure that आप जब ऊपर वो set कर रहे ना parameters, उसमें यहाँ पे आता है foreclosure. तो आपने foreclosure, auctions, new constructions और coming soon को हटाना है and then apply. फिर जो घर houses आ रहे, हमने उन houses पे focus करना है mainly. ठीक है, या मैंने आपको बताया था आप प्रॉप वायर जाके एक स्पेसिफिक मॉर्गेज वाली लीड्स निकाल सकते हैं या आप सेलर फाइनेंस वाली लीड्स निकाल सकते हैं प्रॉप वायर में जाके. ठीक है, अगर आपको जिलो पे नहीं करना. I'll quickly go through Harry's discussion numbers. Name, Lauren, number, list price. Agent said he's okay with $45,000. Let me see the property. 50K, 5K cut, 60,000. House doesn't look bad. Oh wow, look at this. What is that? Is it a cupboard or is it a wall that's not filled? So 60K times 0.65 maybe 39, and he's okay with 45, 42. I think that's not a bad offer. Great opportunity, blah blah, below perfect investor. And you're looking to add their rental portfolio with a functional floor plan, whether you're looking for starter. Lauren. Yeah, I think this is not bad. Not bad. That's not bad. Let me check. One second, guys. I don't know what's wrong with this house. Why is he selling for this cheap? So the ceiling. I wonder if ceiling has any issue, water damage. Harry, is it your deal or is it the Hussein's deal? Hussein, okay. For me, it looks like all it needs is a paint job, and it should be fine as long as there's no water damage. The house looks okay from there. Let me see what's the crime rate here. So अगर crime rate निकालना है तो spot crime में जाएंगे हम और एड्रेस को कॉपी करेंगे और एड्रेस वहाँ पे लिखेंगे. Very simple. Where's the house? Right here. So इस किराए में हम क्या देखते हैं गाइस? कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं किराए रेट में? बाकी चीज़ें हम इतनी टेंशन नहीं लेते. वो कौन सी ऐसी चीज़ है?
Someone has to tell me. Assault. Good one, but no, that's not important to us. Anyone else want to take a guess कि क्या चीज़ हम most important देखते हैं किराए में घर के आसपास? Shooting. There you go. I see Hamad and Fahim is typing, so let's see what they're saying. But yeah, you guys, burglary? No. Robbery? No. No, no, no. So, guys, the most important thing crime में हमने देखना होता है. देखिए शूटिंग के अलावा जैसे ये असॉल्ट है राइट जिसमें मुक्का बना हुआ है इसका मतलब ये असॉल्ट किसी ने किसी को थप्पड़ मारा लड़ाई हुई ब्ला 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 ठीक है ये है पेपर स्प्रे नो इट्स वेंडलिज्म बेसिकली इज ब्रेक कुछ तोड़ा है ठीक है प्रॉपर्टी तोड़ी है कुछ ऐसा हुआ है ये है थेफ्ट और ये सारे असॉल्ट हैं ये वेंडलिज्म अगेन है ये जो है ना ये है शूटिंग द ओनर्स सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे 2 दफ़ा शूटिंग हुई है आई डोंट नो व्हाई इट्स ऑन द थिंग इन्वेस्टर को सिर्फ एक चीज़ से ख़तरा होता है जो कि शूटिंग है उसके अलावा वेंडलिज्म थेफ्ट बर्गलरी ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं इतनी इशू नहीं होती तो अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है शूटिंग थोड़ी सी दूर है आई डोंट थिंक इट्स अ मच डिफरेंस बट बीच में एक बड़ी रोड भी आ रही है उसके बाद 2 और बड़ी रोड आ रही है सो आई थिंक यूर फाइन प्लस अगर आप साउथ में जाते हैं ऊपर की तरफ तो भी ये फेयरवेल ड्राइव जो है एक काफ़ी बड़ा हाईवे है इसको क्रॉस करके आपको जाना है राइट सो आई थिंक वी आर फाइन फॉर द शूटिंग आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू हियर दिस हाउस को बेसिकली हम कर ही सकते हैं इसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको इसका इन्वेस्टर ढूंढते हैं अगर 60,000 है उसने 42 पे हाँ किया हुआ है तो 60,000 times 0.65 30,000 7042 yeah it's like it's exactly at 70 and we don't have a space to do some work in it I will receive within 40 days, but for now, I share details with Harry. Sure. Can you discuss the name or more on can call? Yeah, I was thinking to call. Let's call Lauren. Let's call Lauren. And see if the owner has accepted the things. Hi, this is Lauren. Hey Lauren, this is Syed. I believe you've been talking to one of my partner Anna on email, and for the property at Caldwell Street. Yes. Does it ring a bell? Yes, it does. Yeah. We will be the end buyer on this. I just wanted to have a look at couple. I have a couple questions on it. We'll send you the contract probably by tomorrow if that's okay. Okay. And the things there. Just want to know anything major wrong with the house, like any leaks or in the roof? Not that I know of. Because I see But couples. I Yeah, think the roof is older. It does need, some attention for sure. sure. As far as leaks, I don't think so. Yeah, because I see a little bit of a circular spots on the ceiling in the picture. So I don't know if it's just a paint thing Oh, or. yeah. They tried to put up a glass mirror on the Oh, I ceiling, see. and which didn't work out good, and so they tried to put it back Oh, I the see. other way, and it just didn't. Yeah, it's actually a trend right now that a lot of people are putting glass ceilings on the. Yeah, on the but you walls. got to be a professional, Yeah. You can't try to DIY it. For sure, for sure. And like the roof, do you know if it has been replaced at all? Because I see there's a little bit of a roof issue on the front door side. I don't think it's been replaced. I think it's time. It's time to replace. Okay. Okay, and nothing Yeah. other than that kind of rings a bell for you.
No, I mean it's just aesthetically it needs to be updated and everything. It's just it's a nice clean canvas. It seems like it's in working good condition. It's just it needs some TLC. Okay, and what's the status on the renters? Is there someone living in it? Like, is the owner No, occupied? just a house sitter. It's a house sitters. Okay, I Yeah. see. Okay. Okay, sounds good. I'll work on numbers. I'll probably give you a call by tomorrow. If I'm not able to send anything, but I should be able to get you something by tomorrow. Okay. Okay. Thank you so much. Awesome. Thank you. We'll talk soon. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay. It's I feel like it could be a little bit of a gamble, but what I have to see. देखो इस घर में ना काम है, आई एग्री, बट दो जो प्राइस हमें मिल रही है ना एट ए 3 बेडरूम 1 बाथरूम का, अगर हम वैसे कैलकुलेशन देखें ना अपने 60,000 की, तो हमें टेक्निकली ये घर को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, ठीक है, दो के बनेगा 37,000। तो टेक्निकली ये हम एज अ कैलकुलेशन 37 पे लाना चाहिए, मगर बात यह है कि एक तो एक 3 बेडरूम 1 बाथरूम का घर है और ये डिट्रॉइट में है, ठीक है, और शूटिंग हमने चेक कर ली, कोई इतनी क्लोज है नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम 60,000 को 42,000 पे भी ले आएँ, इवन विद द वर्क, इट्स नॉट अ बैड डील इन माई ओपिनियन। वो इस वजह से कि जब फिक्स करके उसको दोबारा मार्केट पे लाएंगे तब कितने की बिकेगी, दैट्स अ मेन कंसर्न। तो अब हमें बेसिकली करना ये है कि हमें इसके कंपेरेबल्स निकालने, कि इसका कंपेरेबल क्या आता है, ठीक है। तो आई एम गोना टेक दिस एड्रेस, posted in Google, enter. So our house is right here. Okay, I'm going to go back to Zillow and paste the address here and get out. Oh, I don't need to do that. Okay, I need to find where the house is now. Okay, so this is a bit of a work, guys. So basically what I did, I'm doing कि मैं Google Map पे वो खोल रहा हूँ एड्रेस, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि भाई इस तरह का कुछ एक बड़ा सा कम्युनिटी है, उसके बराबर में ये कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी हमें यहाँ पे ढूंढनी है, जो कि ये रही, ठीक है। ऐसी एक बड़ी सी कम्युनिटी है यहाँ पे, जो कि ये हो गई, और उसके बराबर में परपेंडिकुलर एक घर है। ये कम्युनिटी किसके परपेंडिकुलर, सो दिस इज़ वेयर आवर हाउस इज, ओके। अब इस हाउस में भी अगर हम अंदर जाते हैं तो इट्स ऑन ए सेकंड फेयरवेल एंड 7 के दरमियान की प्रॉपर्टी है। फेयरवेल ये 7, वेयर 7, राइट हियर। सो फेयरवेल एंड 7, सो हमारी प्रॉपर्टी समवेयर यहाँ पर है। वो यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही, आई डोंट नो। ओके, या नेवर माइंड। सो वो हमारी प्रॉपर्टी इस जगह पर है। तो मैं फिर ये करता हूँ कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन आपने ड्रॉ जो है ना हमेशा मेजर रोड से करना होता है, ठीक है। ड्रॉ आपने बीच में नहीं करना सर्कल में, कोई भी मेजर रोड है वहाँ से आपने ले लिया, और मेजर रोड को, अब ये हाईवे है तो मैं हाईवे को अपना निशान बना के मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ घर की। ओके, सो अप्लाई। तो अब ये से वो घर दिखाएगा जो इस एरिया में है, और हमारा घर इंक्लूड होगा जो कि 60,000 का, राइट हियर। आई डोंट नो वेयर इट इज़ हियर, बट इट्स ओके। तो अब हमें फॉर सेल से हटाना है। अच्छा, ये हमारा घर है यहाँ पर, ठीक है। हमारा घर है एमर्सी स्ट्रीट और
Buffalo Street, नहीं, Mercy Street and Cordwell Street. Okay, so I'm gonna Cordwell and Buffalo Street. So for sale से sold पे जाएंगे and apply करेंगे. ठीक है, तो अब हमें घर देखने की ये जो जिस बाउंड्री पे हमने घर, oh they remove the boundary, you kidding me? हमारी बाउंड्री तो बहुत बड़ी थी. You have to bring it small. कितने घर sold हुए हैं इस हाउस में, तो you can't even count. Let's say draw. मैं थोड़ी और छोटी बाउंड्री बनाता हूँ ताकि जो है हमको कुछ पता चल सके. अप्लाई. ओके, तो यहाँ पे जो घर सेल हो रहे हैं वो हो 65-75,000 के हो रहे हैं. या सी सेकंड 3 bed 2 1 it's 144. कब सोल हुआ? सोल for 144. Yeah, it could be a good fix and flip. 129, 100, 90, 85, 80, 78. $75. Let's see if this house is in good condition. Yeah, this house is in a good condition, guys. That's the issue, right? I guess bathroom needs to be replaced, but देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं चेक क्या कर रहा हूँ. मैं ये चेक कर रहा हूँ कि सबसे महंगे हाउस इन घर में क्या गए हैं, इन इस एरिया में क्या गए हैं. ठीक है, जो कि 144, 129, 100, 90, 80, 70, 80. सो मीडियन जो है अराउंड 70,000 है. ठीक है, एंड जो सेल एक्सपेंसिव वाले घर सेल हुए हैं वो 144 के हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ बिट कंसर्निंग बिकॉज 100, अगर लेट्स से आपका घर सेल होता है इन तीन के दरमियान जो कि 130,000 है. ठीक है, आपने लिया घर 40 पे है, 42 पे. घर की कंस्ट्रक्शन आपकी एटलीस्ट 30 पे आ जाएगी. प्लस 30,000, तो 72,000 विल बी ऑल इन. और फिर 72,000 माइनस let's say 130, so 58,000 बेसिकली का प्रॉफिट होगा अगर हम, बट ये हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 3 बेडरूम वाला है. हमें एग्जैक्ट करना है. हमारा घर कौन सा है? 3 बेडरूम 1 बाथ का है. 3 बेडरूम 1 प्लस बाथ. तो 3 बेडरूम 1 इज़ 144 पे ये गया. 26 ये 25 पे गया हुआ है. ठीक है, एंड हाउ क्लोज इज दिस वन? इज दिस गाय? right here. तो ये 145 है और हमारा घर है कहाँ पे? एम्ब्री कोर्डवेल. एम्ब्री is Cordwell right here. Emery and Cordwell. तो हमारा घर यहाँ पे कहीं पे है. And this is considered okay. Yeah, the issue is I feel like the house cost is going to be about 87 to 90,000. But we can give it a try. I feel like we can give it a try. We can give it a try. और देखिए ये 3 बेडरूम है और ये 74 का सेल हुआ है. Let me take a note. What I'll do is that before going under contract, मैं दोबारा जो इन्वेस्टर से पूछता हूँ. डिट्रॉइट के तो बहुत ज़्यादा लोग हैं. खैर डिट्रॉइट के इन्वेस्टर से पूछता हूँ हैरी, and I'll get you. He agreed on 845, not his cash over 42. Oh, he agreed on 45. Okay. Sure. Let me work on that. I'll talk to the investors and see if they are able to give me an idea of how much they would want it as. अगर वो बोलते कि नहीं मुझे 42 पे चाहिए, then we have to go negotiate a little bit.
अगर बोलते नहीं 45 पे भी गुड है तो we can just get it under contract. Okay, so Harry, मैंने एजेंट को भी कल का ही टाइम दिया, तो आई हैव अ मीटिंग विद इन्वेस्टर्स टुडे, तो मैं इन्वेस्टर से बात करके उनके सामने रखता हूँ ये प्रॉपर्टी. अगर they're able to do it with all the work, then good. If not, I'll let you know tomorrow. Okay, so just remind me of this if you can today for this house. And we're talking about your property, so I'll chat with them then. Okay, let me see what what's next. April 27. Fahim, I'll have a look at your things. Said by this agent ask his last price is 112500. Can we entertain him on the last offer on 90? On 90. House looks good. No issue with the house. Yeah, no issue with the house. I don't think there's any problem. The only thing I see is the deck on the top image. This deck, I don't know how new this is, but it's not enough for you to go to 0.7 to 0.6. So you're saying 90,000, you want to give it to him. Let's get the calculator. 129 000 times 0.7. Yeah, 90,000 would be good. Yeah, go with the offer of 90,000 and usko mention karo कि we will do the closing cost on this. Okay, for him this deal is good. If you can get him on $90, you have a deal. You have a deal. Plus he's on 37 days on the market, so he will accept the 90,000. Yeah, so 90,000 technically will be the last offer. Let's just say he's like, you know what, I'll give you for 92,000. We will still take it. In $2,000, we're not gonna be like, no, we gotta go on 90,000. No, we'll still take it. But 90,000 will be the last. Follow up with him, and he comes back and be like, yo, I can do 92,000, 93,000. We'd be okay. We'd be okay, but not more than 95,000. Make sense? 91, 92, 93, it will be fine, but not more than that. Because the reason I'm saying it's fine is because इस घर में कोई काम नहीं है करने का, ठीक है? Everything is done for this house, तो हमने बस लेना है और रेंटर को रखना है. अगर इसमें रेंटर है, then it's even better. फ़हीम, इसमें कोई रह रहा है? Brand new, it doesn't mention here, but अगर कोई इसमें रेंटर रह रहा है, then it's even a better deal. Very good deal. और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ये 90,000 वाली ऑफर, तो आप उसको सेल्फ फाइनेंस दें. इसमें ईजिली सेल्फ फाइनेंस लग जाएगा और ईजिली एवरीथिंग ईजिली बिक जाएगा सेल्फ फाइनेंस पे. ओके, hopefully that makes sense. I'll move on to the next person. इस पे आप अगेन कैश ऑफर 90,000 मैक्स, उसको बता दो वो आता है 91, 92 पे आता है, तो आप बोलते हैं ठीक है हम ले लेंगे. ठीक है, अगर कैश ऑफर नहीं एक्सेप्ट करता 90,000 की, देन गो विद सेल्फ फाइनेंस. उसको बताओ कि मैं 10% ओवर दूंगा, 10% डाउन दूंगा और ये घर में ले लूँगा, एंड देन यू गो विद दैट. I don't know if Ahmed is here. I wanted to check. There's one lead I gave it to Ahmed. And I called that guy. The guy called me today. Hello. Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. Buyer of Bright Street, Franklin Park.
How much investment will it take, bro, in the real estate wholesaling? You've reached Tom McKinney with the McKinney Group of Compass Real Estate. Leave a message after the tone, and I'll be certain to get back to you just as soon as I can. Voice messages left after 5 p.m. will be returned the next business day. Hey Tom, this is Saith again. Sorry I missed your call earlier. Just wanted to follow up on the property we have been chatting for a couple months now almost on the Bright Street. Let me know if it's still on the market, or if seller has changed his stance on some of the deals I've sent or deal structure I've sent. I'll shoot you a quick message as well. We'll chat soon. Bye bye. I believe this lead was with Ahmed, I think. But he also doesn't agree on seller finance. Fahim, yes, if it doesn't agree on seller finance, give him cash offer and lock him in. It will be a good deal. Okay. Hey Tom, hope you're doing well. I was just following up on your call. Sorry, I was away at that time. Let me know when you have a moment to chat. Okay. So Emma, this is the guy that I gave it to you. He's texting and calling, but I wasn't able to pick up call. I was on the meeting. Okay. Who's next? Check my messages. I'll go with Hamad. Hamad, I'm going to offer this. Where's with property we can. So is this the property we're talking about? No, it's this one. So I'm going to send an offer for this commercial property. Can you give me, please, or can you please check we are good to go with, 10, 100,000, 10,000, 100,000 down, 42 units in total. There are 7 current vacancies. In the past 5 years, the owner has replaced the roof, windows, mechanical. Does need some paints, touch up always. I have attached financials. Let me know. Further, some flexibility on the price, but it needs to be the right term. Seller is moving his capital to Oregon, where he owns more asset and sold to his apartment building. Okay, so looks like seller needs the cash on this one. Okay, but again, they also know that he's not gonna get any cash, full cash on this. Okay, so go with the your 113,000 down is good. Okay, 19,000 is your down payment is good, so there's no issue on that. And then go with at asking price with 10% down. Yeah, so Hamad, basically for this one, go with this at asking 10% down and send this offer to the agent and tell him if the seller will entertain this offer or no. Okay, seller entertain करेगा. अगर नहीं करता तो फिर हम उसको बताएंगे कि अगर नहीं करता तो हम उसको बोलेंगे कि भाई why, फिर वो बताएगा लोन वगैरह, तो फिर तब देखेंगे. बट इसको आप इतनी ऑफर कर दो जितनी मैंने आपको बताया. What else? Yeah, I think this is good. आप उसको 100 and again 10% of this
and at asking price. Okay, ऑफर करो और फिर जो मंथली पेमेंट है अगर पूछता है तो फिर वी कैन रन द मंथली पेमेंट. वैसे आप रन कर सकते हैं, आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम ये थी. Let me actually do it real quick just so you have an idea. नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको मिल गई. NOI सबसे इजी होता है, अगर आपको मिल गई है देन उस नेट ऑपरेटिंग इनकम हमेशा एनुअली होती है, तो आपने उसको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स अमाउंट करना था, डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 महीने की इनकम है ये. So 460 divide by 12 to 10,000. 10,000 per month is the net income. Okay, a lot of money he's making. $10,121 is the net income. Total cost is 1.9 million. 1900000. That's 30 million actually. 1.9 million. So down payment would be 190,000. The rehab cost is probably gonna be more, man. 20,000. Let's go with 20,000. Let's go with 30. Just to be safe. Bucky, everything is zero. We are still making 38% return. Let's say if it's a 1.9 million building. ठीक है, अगर इसमें आपको 4 यूनिट में भी काम आ गया ना तो easily 50 से 60 हज़ार का काम है ये. तो let's just go with 50,000 at the best because we are still making a decent cash flow. ठीक है, तो 50,000 का हमने खर्चा निकाल लिया. Amortization हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि this is way too high. 60, 50 maybe, 40. Okay, so we can go with amortization even less to 30 ताकि मिस्टर सेलर को पता हो कि हम अच्छे खासे पैसे पे कर रहे हैं. Yeah, let's go with this. One second, let me go with 40 actually so that we have room to negotiate. Okay, so whose deal was that? Hamad, this is a decent deal. अगर वो एग्री करता है सेलर फाइनेंस में, so I think that would be good. इसका ज़ाहिर है कैप रेट is okay and net operating income is good in my opinion. और ये बोल रहा है परफॉर्म रहा, इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ें फिक्स करोगे तो आपकी ये इनकम और बढ़ जाएगी. ठीक है, तो कैलकुलेटर का मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ. 1.9 मिलियन हम उसको ऑफर करेंगे जितनी वो मांग रहा है. ठीक है, 10% डाउन, 0% इंटरेस्ट और जो मंथली पेमेंट इज गोना बी 356. अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट दो, तो लेट्स से इफ इवन पुट 2% इंटरेस्ट, जो कि 2% पे वो कभी भी नहीं मानेगा. We go down a little bit, so maybe we can give him interest in interest column, or we can increase it to 2 million. So let's do it 2.1 million actually. I want to do a little bit more so that he takes the deal. 2.1 million is how much over asking? 10% over asking? Yeah, it's 10% over asking. 10.5%. Yeah, which we can do. Let's start with 2 million. 100,000 more. Yeah, let's start with 2 million. Okay, let's actually do that. This is better numbers than ad asking, because I like his rental income. His rental income is good. Hamad, I'm sending you this screenshot, okay? I don't know if you're here still or not, but can you confirm the POF of this company, Bonnie?
Hamad, can you tell me more about this Bonnie Avenue, Hillside Drive, and Napier Avenue? And also, you wanted something to do with this as well, I remember. Okay, what are we doing with this one? I forgot. 100% occupied, no major repairs needed. This one is on the 90th Avenue. So no major repair needed. Non-renter is rares in first. He's asking to call to discuss further details. Agent saying unavailable from 12 to 2 at office and same time. Otherwise, I usually take 5 minutes call to coordinate. Most days to text and then. Hamad, this property इसमें आपने इसको 10% over किया या फिर नहीं किया अभी? I'll call James and see where he's at. Hi, you've reached Jim with Callaway in the Greater Cleveland. I'm not able to get to the phone right now, so please leave your name, your number, and the time you called, and I'll get back to you as soon as possible. Appreciate your time, and look forward to speaking with you. You have a good day. Hey James, this is Syed. Me and Hamad has been working on this property on 18th Street West. We were kind of running the numbers, kind of put together an offer in place for you. You requested us to give you a call, so just kind of returning the call. I wanna kind of, I'm really interested in sort of a seller finance offer. We're thinking about six-figure down payment, about 10% of the property, and about 84 months in terms of the payment plan. Let me know how that sounds to Mr. Seller, and we can go from there. Okay, I'll shoot you a quick text as well. In the meantime, Hamad will also be able to follow up with you on the numbers. Chat soon. Bye bye. 1.490. Net operating income is 79.53. 79.53. 6628. 6628 is net operating income. 1349, 1349. 10% down would be 1349900. Okay. Yeah, so I think the net operating income, everything 50,000, let's keep it at that. Yeah, Hamad, you can go with this these numbers. Let me go up to a little bit over asking. Let's do 4,000. So 1.4, go with 1.4 instead of 1.3. And you can give them this offer. Copy. I'm gonna paste this one.
Not yet. All three good to go. Rental, no work required. Agent needs PO fund search. Sure. Hamad, just remind me on this. I will actually let me what's the what's the agent number? Let me call and kind of work on kind of build some report. Hamad, give me the number of this property that has agent that has three property on Bonnie Hill Road and Napier or Napier Drive. Shoot, I forgot to save the agent's number. What's registered? 720. Get any contract. Hey James, hope you're doing well. Just left you a quick voice note on the property located at Street, Cleveland, Ohio. We wanted to go with a seller finance offer on this. We're looking to come over asking along with 6-figure down payment. Let me know if the Mr. Seller is willing to entertain this offer. Mr. Seller, I will have something in writing by tomorrow. Okay, let me close this property because we are done. Let's go with this lady, Carla. Please leave your message for 478-390. Hey Carla, this is Sayed. I believe you've been speaking to one of my acquisition manager, Hamad. We were kind of working on these three property, putting numbers together to kind of see where we at on this. I feel like we're interested on these property numbers work well. You requested proof of fund and sort of the document, so I will send our portfolio in the email shortly. Just wanted to kind of say quick hi and kind of introduce myself. But yeah, I will also shoot you a quick text as well, and we can go from there. We'll chat soon. Bye bye. This is 2770. Hey Carla, hope you're doing well.
I just left you a quick voice note on the property that we have been discussing via email. Wanted to call you, have a quick chat for credibility. I will also send you our portfolio and proof of funds shortly. Let me know if you have any other questions. Okay, so I've sent her a message and a call. Remind me to send the portfolio proof of funds. Okay, so I think there's two people today that said they need to send a proof of funds. So please, guys, if you're here, remind me. Okay, Hamad, remind me in about 2 hours because I have to go to a meeting and then I'll be done after that. Okay, let's move on to the next one. I have a Google Docs. What time? At 1 o'clock. Yeah, I'm gonna be done very soon. Is it the Michael guy? Heather? That he was rude last time? Nicole is saying, what mortgage information do you need? Just write an offer. I don't understand why you guys always make this so difficult. There's no mortgage takeover. She's close to being flipped on both of these property. She's not making a profit, just want an offer on a paper so I can present. Note agent is not confirming the mortgage detail. This is the same investor who said the bridge loan solid loan payment if I offered self-finance but did not accept it. I think the cash offer would work. Who gave you this? Oh, this is the renter information. Listed price, tax. Yeah, it's 300,000. Cash offer on these will not work. She wants 1.9 million on this. It's mentioned here, right? Like the total loan. Heather, are you here? Yes, the loan is from PropWire. Oh, the loan is from PropWire. Yeah, I mean, cash offer will be tough on, and she's selling all the portfolio at once. She don't want to sell it at. She don't want to sell it one property at a time. I think इस पे मेरे ख्याल से ना आप I think you'll have to do the seller finance. इसमें cash तो नहीं लगेगा. Almost none of the property will be in the cash deals. अगर आप उसको seller finance का बोलो पूरे portfolio का or about go 10% higher are not able to payment too large. The rent payments are not high. Is that what you're saying? 14,000 is 1.4 million. Yeah, it's gonna be tough. But forget about the loan payment. Get a seller finance offer and send it to. Did she rejected the seller finance? Did you say she rejected? I gave rejected. Yeah, then the cash offer you have to go with the ones that has more rent. So this one rents 900
4 unit. So go with the 4 unit and give him the cash offer on this. I don't know how low we have to go to make this work. Cash offer 0 times 0.5. Even if I do 50% off, we're not close to the cash offer. No, 70% will not work because it's still going to be very high for cash offer. She's not going to sell this portfolio unless she's going into the seller finance agreement. What is this 1 million thing? Oh, 110% we're asking. I think the best option here would be to just put her on the follow-up list. Put her on the follow-up list and just follow up until she take the seller finance offer. Even if you give her 10% down, which is gonna be in 6 figures, okay, 1900,000. She's still not taking it, so I don't know what else we can do here. If seller has rejected his offer, how many days have they been on market? They're probably new people to the market. 86 days. Yeah, it's gonna be there for long. Gonna be there for long. You know what, Heather? I think give him cash offer. Give him cash offer for the ones that you're getting close to 150. Okay, so give this one cash offer. Give this one cash offer. Okay, 25, 225 and 269. These 2 houses. Or is that the one that has issues in the house? Such a weird looking house, man. Oh, this is not the one we need. We need this one. Yeah, so 219. So if everything is good on this too, calculator. Yeah, so looks like she knows what the agent has flipped this house, the seller. तो इसको आप 70% दे सकते हो. I think it's gonna be close. Times 0.70. Yeah, 0.70 is 153. Okay, so go with 150. And then if she negotiate, we can go up to 153. So go this one for 150 for this one. This one is 250 times 0.70. It's 175. But it's a duplex. Yeah, it looks, the house is in tip-top condition. I have no issue with the house. Yeah, so the house is in a good condition. Go with this one, 165. Go with 165. Maybe we have to bring in 2 investors on this. The agent says, who said the investor said they could bridge loan for this? And no, don't worry about the bridge loan. Don't worry about that. This is not gonna work with our investor. Usually those ones are like the ones that have a high interest rate, very high interest rate. You can do it. I see Ahmed is typing. Ahmed, just make sure you follow up with the Tom guy that I gave you because he called me today. That probably means they're interested. Okay, guys, I think I'm gonna end it here. Heather, 2 things. So
One house, this one you're gonna offer 150. This one you're gonna offer 160. Okay, I don't know if I can type. I can't, but 150 and 160. Okay, and then send them these two offer and tell them we'll pay the closing costs and go from there. Okay, guys, it's been a while. I will let you guys go. We'll talk a little bit tomorrow, guys. For those people who I told you that needs the proof of fund, there's two people. I think the one for Anna, and there was one for Hamad. Make sure to follow up with me on these two things. Okay, I'll talk to you guys later. Let me see. It's getting a couple messages. But please call Ahmed after class. Who's Ahmed? Say by Mario says does not waste any time after listing the cash offer. Mr. Mario. Are the condition same to send for the offer commercial property 7 days? No, the inspection period for commercial properties are a lot higher. Okay, just don't talk about inspection period. It says inspection. Don't talk about inspection and closing time, because for commercial properties are a lot higher. In 7 days they can even maybe only be able to do 2-3 units. There's 42 units. They cannot do it in even 30 days. So sometimes it takes longer, but don't worry about it. Inspection, just tell them like this is the numbers I'm running at, and just remove the commercial part of it. Check inbox for Ahmed. Sounds good. Say by Mario. Ahmed, I don't know. Just keep following up on him. Just be on the good books on it and keep following up on him. He's not going to sell the property, that's for sure. The only way to sell is the seller finance and on our terms. But keep following up on him and then make calls. Okay. All right, guys. I will see you guys tomorrow, inshallah, same time, and we will talk more on that. Okay, there's a couple of people on YouTube, and there's no one on TikTok, so let me stop the TikTok. Okay, how much investment will it take, bro, in the real estate? There's no investment. For you, there's I think $15 per month investment for the community, but there's no other investment. All the money, we will do it for you. It's not going to be an issue. My agent was agree with 45. Yes, so your agent, I have to call to the investors today. I'll bring this deal to investors and see who's willing to take it at 45, and go from there. Okay. All right, guys, it's been a long time. I'll talk to you guys tomorrow. Any information you need, come back at the same time tomorrow and we'll go from there. Take care for now. Bye bye.